So remember, there are different classes which are there are different classes of drug which are used in the treatment or which are used in the treatment of your angina pectoris or anginal symptoms. So these are nothing but these are few classes. So nitrates or vasodilators, then calcium channel blockers, beta blockers, potassium channel openers, partial fatty acid, partial fatty acid oxidase inhibitor, and these sodium blockers. Now, drug used in the angina. Now, organic nitrates or vasodilators. Nitrates, what will they do? They will dilate the blood vessels. They will they dilate the venous blood. So they decrease the preload. They decrease the preload on heart, and that's why afterload is also decreased. And in higher doses, they also dilate the arteries. But basically, they are the vasodilators. They are used for the relief of attack during the okay, they are used to relieve the pain during the attack. So drug of choice is nothing but the nitroglycerin. So drug of choice in case of acute attack of angina pectoris, that is a nitroglycerin. And these drugs are also used for prophylactically they are also used to prevent the pain during they are also used to prevent the pain of angina pectoris. So prophylactic. Again, second class आएगा आपका calcium channel blockers. Calcium channel blockers, they are also again used for prophylaxis. They are also used for prophylaxis. So what they will do? Calcium channel blockers, they will decrease the okay. They will do two things. So first, they will dilate the blood vessels by blocking the calcium channels, and also they will block the calcium channels of your heart and also decrease the work on heart workload of heart. So they are also used for prophylaxis. Calcium channel blockers, they are always used for prophylaxis. Beta blockers, they almost and always are used for prophylaxis. So इसमें correction या फिर treatment का कोई word दिख रहा है आपको नहीं, because all these drug used in angina, they are used for prophylaxis, okay, to relieve the symptoms. They are not used to correct, because most of the time correct क्यों नहीं है? Because cause क्या है? Cause, what is the cause? The cause is nothing but there is a deposition of arteriosclerotic plaque in your coronary artery. coronary artery में क्या है? Arteriosclerosis है या फिर उसका spasm हुआ है, तो ये ड्रग क्या करेंगे? Cause नहीं रिमूव कर रहे, they will just remove they are just removing the symptoms. And due to angina, so it can the angina will later on, due to angina later on there is a chance of development of congestive cardiac failure and also myocardial infarction. Again, you can see drug used in the angina pectoris, anti-anginal drugs. So what are the different classes? First one is the nitrates. Nitrates मतलब nitroglycerin and their derivative. So they will dilate the veins. तो इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन आता है शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड वोलेटाइल. ये तीनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So I will explain you, don't worry. So what are the short acting nitrates? So glyceryl trinitrate, also known as a nitroglycerin, इसको अपन nitroglycerin बोलते हैं. It is given by orally as well as subliminally. Okay? Duration is short. Isosorbide dinitrate. So it is given orally. Isosorbide dinitrate. Orally थे, subliminally भी देते हैं. Oral and subliminal. Isosorbide dinitrate. Both are the short duration of action. And remember, all these nitrates, so they are having okay, they undergo first pass metabolism, extreme first pass metabolism, okay, and okay, only one drug is there, so known as this isosorbide mononitrate. Isosorbide mononitrate, so which is having 100% bioavailability. इसका bioavailability 100% होता है oral. So other drugs, they will undergo first pass metabolism, but this isosorbide mononitrate will not go under first pass metabolism. Okay? So ये short acting है. This nitroglycerin is the drug of choice in a acute relief of anginal pain. Now long acting में आता है isosorbide dinitrate. Isosorbide dinitrate. So it is a orally, if it is used, it is a longer acting, and if it is used subliminally, it is a short acting. So isosorbide dinitrate, subliminally it is a short acting, and orally it is a long acting. याद रखना है आपको. Then isosorbide mononitrate, that is a having 100% bioavailability. Okay, it is the only drug which will not undergo first pass metabolism. Then erythritol tetranitrate, erythritol tetranitrate, penta erythritol tetranitrate.
अभी ये जो पेंटा इरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट है, now this is the पेंटा इरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट, so it is the longest acting. ये क्या है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग है. तो यहाँ पे इसमें ही मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन का जो ऑलरेडी क्वेश्चन बनते हैं आपके, उसका आंसर मैंने यहाँ पे ही दे दिया आपको, है ना. बाद में तो आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया आपको. सो ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट नोन एज नाइट्रोग्लिसरीन, it is given orally as well as subliminally. It has short duration of action. Then isosorbide dinitrate, so it is a given subliminally, then it has a short duration of action, and if it is given orally, it has a long duration of action. Then isosorbide mononitrate is having 100% oral bioavailability. All other drugs they are extremely undergo first pass metabolism. बाकी ड्रग जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उनका, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट का नहीं होता. आई है ना, आई एम ISN, ISM, isosorbide mononitrate. Then penta-erythritol tetranitrate is having longest duration of action. ये जो है ये longest है. और क्लासेस वाले को भी क्या है, उनका उनका चलता रहता है, पढ़ते नहीं. इसको पढ़ना पड़ता है, पहले पढ़ो. जब मेरा खुद का पढ़ना अगर नहीं हुआ है, अगर मुझे मुझे लगता है कि यार मैंने प्रॉपरली पढ़ना चाहिए और ये चीज़ नहीं पढ़ा है, तो मैं उस दिन कैंसिल करता हूँ सेशन. इतना नहीं हो, क्योंकि आपका नुकसान ना हो. बट आपको क्या है कि आपको लगता है बस पैसा दे दिया, मतलब आपको नहीं, बाकी बच्चों को पैसा दे दिया तो सब कुछ हो गया, सेशन को आना चाहिए. सेकंड होता है क्लास बीटा ब्लॉकर्स. सो बीटा ब्लॉकर्स, इन दैट यू आर गोइंग टू हैव लॉल्स, propranolol, metoprolol, atenolol and others. So what they will do, they will decrease the workload on your heart. So they will decrease the, they will block the beta 1 receptor in the heart, and they will decrease the heart rate and force of contraction. So that's why workload. And also they will okay, also because of that they will decrease the oxygen demand. थर्ड कैटेगरी आता है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सो इन दैट verapamil, it is known as phenyl alkylamine derivative, diltiazem, dibenzodiazepine derivative, then amlodipine, nitrodipine, ये सब डेपिन जो है दे आर नोन एज डाइहाइड्रोपिरिमिडिन डेरिवेटिव, है ना. देन नेक्स्ट आता है पोटेशियम चैनल ओपनर. पोटेशियम चैनल ओपनर में आएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है. मैकेनिज्म क्या है, सो वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज पोटेशियम एक्ट बाय पोटेशियम ओपनिंग द पोटेशियम आयन चैनल, और सिंपली पूछा है पोटेशियम आयन चैनल ओपनर निकोराइंडिल. 2-3 बार आ चुका है, बहुत सारे बार, पेपर में देखो. देन अदर एंटी एंजाइनल ड्रग, ओके, देन यू कैन से इट इज अ ट्राइमेटाजिडीन, रेनोलेजिन. ये दोनों क्या है, पार्शियल फैटी एसिड ऑक्सीडेज इनहिबिटर है ना. एक नया क्लास लिख लो यहाँ पे, पीफॉक्स इनहिबिटर, पार्शियल फैटी एसिड ऑक्सीडेज इनहिबिटर. ओके, देन रेनोलेजिन and ivabradine, they are the sodium ion channel blocker. So they are known as a sodium, funny sodium ion channel blocker. Okay, funny sodium T current blocker, funny sodium current blocker, they are known as ivabradine and ranolazine. Then next is oxyprenadine, and then dipyridamole. Dipyridamole is a vasodilator again. तो dipyridamole आपको इसमें भी आ चुका है, इसमें anticoagulant में. So it also decreases the platelet aggregation. So it has a dual action. First is a vasodilator and second one is a platelet aggregation inhibitor. Means ये थोड़ा सा करेक्टिव भी करता है, करेक्टिव काम भी करता है, सिम्टम्स को रिड्यूस करेगा, करेक्टिव भी काम करता है. So these are the classes of drugs. Okay, remember nitrates, beta blocker, calcium channel blocker, potassium channel opener, and other. In that you have partial fatty acid oxidase inhibitor, sodium panicurrent blockers, and then vasodilator. So most of the time क्वेश्चन आपको इससे से आएगा कि क्लासिफिकेशन. दैट्स व्हाई क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 2-3 टाइम्स. और एक क्वेश्चन आपको आएगा नेक्स्ट स्लाइड में. अगेन यू कैन सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज्ड इन द angina pectoris. So as I told you, I used to take 3 times different classification. So first is organic nitrates. Organic nitrates. So in that you have 3 classes: short acting, short acting, long acting, and volatile. तो वोलेटाइल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है रिसेंटली, लास्ट ईयर में पढ़ा था मैंने. शॉर्ट एक्टिंग में आता है आपका नाइट्रोग्लिसरीन एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट सबलिमिनली. लॉन्ग एक्टिंग में आता है आपका आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, है ना. लॉन्ग एक्टिंग ओरली लॉन्ग एक्टिंग है. शॉर्ट एक्टिंग कब है, सबलिमिनली. आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट 100% बायोअवेलेबिलिटी. इरिथ्रिटिल टेट्रानाइट्रेट, पेंटाइरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट, पेंटाइरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट, ये क्या है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग है. देन वोलेटाइल में आता है अमाइल नाइट्रेट,
तो क्वेश्चन पूछा है एक बार, वोलेटाइल ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, वोलेटाइल कौन है, अमाइल नाइट्रेट, धन्यवाद, अमाइल नाइट्रेट इज वोलेटाइल। इन बीटा ब्लॉकर्स तो आप मालूम है, प्रोप्रानोल, बेटाप्रोल, अटेनोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में तीन आता है, फेनोल्फोरामाइन डेरिवेटिव, इट इज वेराबोमिन, बेंजोथायाजापिन डेरिवेटिव, डिल्टियाजेम, डायहाइड्रोपिरिमिडीन, उसमें सब डेपिन्स आएगा, निपेडेपिन, अम्लोडेपिन। अम्लोडेपिन का ईएस आइसोमर है ना, वो एक्टिव होता है, ईएस अम्लोडेपिन, ईएस अम्लोडेपिन। देन फेलोडेपिन, नाइट्राडेपिन, निमोडेपिन, निम्लोडेपिन, इट इज अ मोर सेलेक्टिव फॉर द सेरेब्रल ब्लड वेसल, ये सेरेब्रल ब्लड वेसल को ज्यादा डायलेट करते हैं। देन बेनिडिपिन, लेसडिपिन। पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स में आएगा निकोराइडिल, पिनाजाडिल, है ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका, सो दीज ड्रग्स दे एक्ट्स बाय dilating the coronary arteries, they acts by dilating the coronary arteries, or by reducing the cardiac workload, or by decreasing the cardiac workload, okay, reducing the preload and afterload, है ना। currently used drugs they act by, जो ड्रग्स आप यूज कर रहे हैं वो कैसे एक्ट होते हैं, currently used drug they act by either reducing the afterload, they will decrease the afterload, they will reduce the afterload. So afterload means they will decrease the end diastolic pressure in the left ventricle, and they will also dilate the arteries. So calcium channel blockers, beta blockers, and nitrates reduces the preload. So basically nitrates, they will dilate the venous, all veins will be dilated. They will decrease the preload. Some drugs are negative inotropic, so they will decrease the heart rate and force of contraction. So beta blockers and calcium channel blockers. Coronary dilators कौन से है फिर, nitrates and calcium channel blockers. So these are the drugs. Okay, now we'll see the one by one individual drugs. So first is organic nitrates. So organic nitrates, they will decrease the, okay, they are reduced to the, okay, organic nitrates, they are reduced to the organic nitrites. तो पहले nitrates का nitrate हो जाएगा in the lumens of blood vessel, okay, and then they will be converted into nitric oxide, so they will release the nitric oxide, याद रखना है। So nitrates, organic nitrates, first they will be reduced to the organic nitrites by the enzymes present in the lumen of blood vessel, and then converted into nitric oxide, and they act as a direct vasodilator, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, एंडोथेलियम डिराइलेशन फैक्टर, they serve as a source of nitric oxide without involving the endothelial cell nitric oxide. So they are the basically nitric oxide donor. What are the actions of nitrates on a cardiovascular system? So hemodynamic action, blood के ऊपर क्या action है? So relaxation of systemic, venous as well as arteriolar bed. मतलब ये in a smaller doses they will dilate only veins, but at a higher doses they will dilate veins as well as arteries. So there is a relaxation of systemic, venous as well as arteriolar bed. Action on systemic, venous, that is known as action on venous. Veins के ऊपर क्या action है? Veins मतलब क्या होता है? Capacitance. They are known as capacitance blood vessel. So action on systemic, venous, that is capacitance, and arteriolar, that is known as impedance. arteriolar arteries को क्या बोलते हैं? Resistance blood vessel, उसको बोलते हैं impedance, capacitance, impedance. They reduces respectively. Preload, ये क्या करते हैं? पहले तो because of the action on capacitance, they decreases the preload and end diastolic left ventricular pressure, and also afterload कब होगा? Due to impedance, okay? Resistance to the left ventricular ejection on heart, left ventricular load and energy, and thus they will decrease the energy requirement of myocardium. Are you getting or not? समझ रहा है यहाँ पे आपका? Okay. क्या करते क्या है exactly वो? So what are the actions of nitrate on your heart? Hemodynamic action, मतलब blood के ऊपर क्या करते हैं? So they will relax the, you know that nitrates are venous, ना, वेनोडाइलेटर, ये वेन्स को डायलेट करेंगे पर्टिकुलरली, ठीक है, एट अ स्मॉलर डोसेस, बट थोड़ा सा डोज बढ़ाया तो आर्टरीज को भी डायलेट करते हैं। तो वेन में जो ब्लड है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेन में से जो ब्लड जाएगा आपके हार्ट में, राइट एट्रियम में, उसको बोलते हैं अपन प्रीलोड, है ना, प्रीलोड। तो एज दे आर अ वेन डायलेटर, अगर ये नाइट्रेट ब्लड वेसल वेन को डायलेट करते हैं तो ब्लड जो एट्रियम में जाने वाला है वो क्या होगा? कम होगा, है ना, उसको अपन प्रीलोड बोलते हैं। सो दे विल डिक्रीज द प्रीलोड, है ना, एंड प्रीलोड अगर कम हुआ है तो
एन डायस्टोलिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है ना वो भी कम होता है, मतलब प्रीलोड कम हो गया, मतलब राइट एट्रियम में ब्लड कम जा रहा है तो राइट वेंट्रिकल में कम जाएगा, उससे लंग्स में कम जाएगा और लंग्स से वापस आने वाला भी कम रहेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कम जाएगा ना। सो एन डायस्टोलिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर भी डिक्रीज्ड। एक तो ये हुआ है, दे विल डिक्रीज द प्रीलोड, क्लियर। At a higher doses, they will dilate the arteries also. So arteries, largest artery, you know that it is aorta, and aorta is the है ना, it is a resistant to the blood flow from left ventricle. So whatever resistance offered to a left ventricle to the flow of blood, लेफ्ट वेंट्रिकल जो इजेक्ट करता है ब्लड, उसका रेजिस्टेंस कहाँ पे आता है, aorta से आता है, that is known as after load. So resistant to the left ventricular ejection. So resistance by aorta to the left ventricular ejection known as after load on a heart. So obviously they will decrease preload as well as after load, and that's how they will decrease the energy demand, है ना। आफ्टर लोड कम हो गया, प्री लोड कम हो गया, तो हार्ट का जो काम है वो भी कम हो जाएगा। तो हार्ट का काम कम हो गया तो एनर्जी भी कम लगेगा उसको। क्यों करना है, क्योंकि आपकी कोरोनरी में ब्लॉक है, वहां से जितना नॉर्मल अगर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं, नॉर्मल अगर ब्लॉक नहीं होता वहां पे तो आपने काम बढ़ा भी आपके हार्ट का तो उतने अमाउंट में ब्लड सप्लाई भी हो सकता था उसको, लेकिन वहां पे कोरोनरी में ब्लॉक है आपके, है ना, तो वहां पे सफिशिएंट ब्लड नहीं जा रहा है ना। तो आपको क्या करना है फिर, सफिशिएंट ब्लड तो नहीं जा रहा है ना, आपको पेन भी नहीं होने देना है, फिर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रैटेजी अपने को ये देखा है कि यू कैन डायलेट द ब्लड वेसल, है ना, ब्लड वेसल को डायलेट करो। या फिर दूसरा चीज है कि आप हार्ट के ऊपर का जो काम है हार्ट का वो कम करो। तो हार्ट का काम कैसे कर सकते हो आप कम, तो प्रीलोड कम करो, उसके ऊपर जो आने वाला ब्लड है वो कम करो, जाने वाला जो रेजिस्टेंस है वो कम करो, है ना, या फिर उसका हार्ट रेट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम करो। आर यू गेटिंग और नॉट, समझ रहा है नहीं। Now next is nothing but the coronary circulation. So what is the action on hemodynamic action of nitrates? They will decrease the preload and afterload. तो जो वेनस रिटर्न है अपन उसको ही कैपेसिटेंस बोलते हैं, ये पहले ही बोला है कैपेसिटेंस ब्लड वेसल, और जो रेजिस्टेंट ब्लड वेसल उसको अपन आर्टरीज बोलते हैं, उसको इम्पेडेंस बोलते हैं। They will decrease the preload and afterload. Coronary circulation, they will decrease the coronary resistance because of their vasodilatory action, increasing the total coronary blood flow. They will increase the total coronary blood flow. Dilation of large epicardial coronary arteries, collateral vessels, and redistribution of coronary blood flow with improved perfusion of at the ischemic area. जहाँ पे ब्लड कम जा रहा था वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देगा। Actions of nitrate in case of angina. So they act in a patient by increasing their exercise tolerance. तो जिनको angina pectoris है वो अगर एक्सरसाइज करने लग जाए तो उनको पेन होता है चेस्ट में, तो अगर नाइट्रेट्स दे देंगे उनको, नाइट्रेट्स दे दिए और अभी बोले एक्सरसाइज करो तो उनको पेन नहीं हुआ, बिकॉज दे आर इंक्रीजेस द exercise tolerance. So in patient with angina, they will increase the exercise tolerance, but without increasing the anginal index, and they probably it is achieved by reducing the oxygen consumption on heart at a submaximal exercise. Then we'll see next. Now how they will act. So organic nitrates, you know, organic nitrates, they are reduced to the nitrites and they release the nitric oxide. Nitric oxide जो है that is transported into cardiac cell and it will activate the guanyl cyclase. So guanyl cyclase का काम क्या होता है, it will convert GDP, guanine triphosphate, into cyclic GMP. Cyclic GMP, cyclic GMP, increased level of cyclic GMP in the cell, it will decrease the calcium level in the cell, and that's why there is a relaxation of cell. They will dilate the blood vessel, they will dilate the blood vessel. अभी ये नाइट्रेट्स क्या कर रहे हैं, साइक्लिक जीएमपी सेल में बढ़ा रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द साइक्लिक जीएमपी इन द सेल। अभी देखो, अभी खतरनाक वाला किस्सा बोलता हूँ आपको। तो सपोज यू आर यूजिंग नाइट्रेट्स, बेसिकली पहले इसको क्लियर करके, so nitrates what they do, they will increase the cyclic GMP in the cell to cause the relaxation of blood vessel, increase करता है। Now if you are using nitrates for angina and if you take this sildenafil citrate, ये sildenafil citrate क्या है, it is a drug used the erectile dysfunction, है ना, तो उसका यूज है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, बट लेकिन आजकल सब मिस यूज हो रहा है। सो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है फिर भी आप क्या कर रहे हो, सिल्डेनाफिल साइट्रेट ले रहे हो,
So what will happen? What it do? How it will act? It inhibit the phosphodiesterase enzyme. PDP, PDE, phosphodiesterase enzyme. Sildenafil citrate will inhibit the phosphodiesterase enzyme. What is the role of phosphodiesterase enzyme? तो phosphodiesterase enzyme का रोल होता है, again it will increase the cycle, but वो कहाँ पे आपका है ना, कन्वो कवर्नोसस सेल में, कॉर्पस कवर्नोसस सेल में, ठीक है, वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए सिल्डेनाफिल यूज करते हैं टू so that there will be erection, so erectile dysfunction. But if somebody is suffering from angina and if he takes this sildenafil citrate, what will happen? There is a sudden increase in the cyclic GMP in the cell, you know, sudden increase in the cyclic GMP in the cell, in penis as well as in the other cells. So what will happen? So सीवियर हाइपोटेंशन, इतना ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा कि उसका कार्यक्रम हो जाएगा राम नाम सत्य। राम नाम सत्य बहुत सारे न्यूज में देखा हो कि ये दो तीन जो होता है क्या बोलते हैं उनको, पॉलिटिशियंस, सो वो भी ऐसे ही मर गए क्योंकि उनको पहले अनजाना था, उन्होंने ये सब कार्यक्रम किया और सुबह सुबह रात में ही खत्म। बट न्यूज में आता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो अलग बात है, वो उसके लपड़े में नहीं पड़ना है अपने को। बट ये ऐसा होता है क्यों? if you take if you are under treatment of organic nitrates, so how they will act? They will increase the cyclic GMP level in the cell and they will relax the smooth muscles of your blood vessel. Okay, again sildenafil citrate is doing same thing, so it inhibit the another enzyme, phosphodiesterase enzyme. So that enzyme is responsible for the metabolism of this cyclic GMP. phosphodiesterase enzyme वो मेटाबोलाइज करता है उसको साइक्लिक जीएमपी को, अगर उसको इन्वेट किया तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ता है, एंड दोनों साथ में यूज करें तो ज्यादा साइक्लिक जीएमपी लेवल बढ़ता है, और उसके कारण बहुत ज्यादा वेस्कुलराइजेशन होता है, बहुत ज्यादा हाइपोटेंशन होता है और हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है और कार्यक्रम होता है, ठीक है। सो ये यू शुड रिमेंबर, ओके। सो दे आर absolutely contraindicated with each other. You can read the books मध्ये पण दिलंय, also given in the books. Now different drugs, how they will act, okay. So you know that vasodilators, nitrates how they will act? So they will generate the nitric oxide which will increase the cyclic GMP. Now cyclic GMP, you know, will free the cytosolic calcium, means they will block the calcium ion channel, and that's why relaxation, ये drug हो गया nitrates. Calcium channel blockers, how they will act? So normally क्या होता है कि in the cell during the contraction of your myocardium, this calcium channel opens and calcium goes inside the cell, and again once calcium is entered in the cell, more calcium will be released from the sarcoplasmic reticulum, and this calcium act on a calmodine system of the cell. It interact with the calmodine, and then this complex will act on this myosin light chain kinase enzyme, तो myosin light chain kinase enzyme के साथ में इंटरेक्ट होके कैल्शियम क्या करता है, फिर मायोसिन जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है आपके सेल का, एंड एक्टिन जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ सेल, सो एक्टिन मायोसिन को साथ में लेके आता है, दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर सेल, ओके। नाउ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, व्हाट विल दे डू? दे विल ब्लॉक दिस एंट्री ऑफ कैल्शियम इन द सेल, कैल्शियम अंदर नहीं आएगा, कैल्शियम इंटरेक्शन नहीं होगा किसके साथ में, कलमोडिन के साथ में, कलमोडिन, ओके। दिस कलमोडिन क्या मतलब, क्या कलमोडिन, दिस इंटरेक्शन इज प्रिवेंटेड, एंड देन दिस मायोसिन एंड एक्टिन, है ना, यूनियन इज प्रिवेंटेड, है ना। जब एक्टिन एंड मायोसिन साथ में कंबाइन होता है तभी कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि एक्टिन मायोसिन क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ योर मसल, मतलब मसल के मायोकार्डियल मसल या बोलो या फिर स्केलेटल मसल बोलो या स्मूथ मसल के, सब में क्या होता है, मायोसिन एक्टिन, दे आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। आर यू गेटिंग और नॉट? आर यू गेटिंग और नॉट? समझ रहा है नहीं समझ रहा है? सो एक्टिन मायोसिन दे विल कम टुगेदर टू कॉन्ट्रैक्ट द मायोकार्डियम, so that is prevented by calcium channel blockers, and your nitrates, they will release the nitric oxide, they will relax the cell, that's how they will act, right? Now, other vascular effect of nitrates, so nitrates का other vascular bed के ऊपर क्या action, आपकी blood vessel, so relaxation of blood vessel of skin, अगर स्किन का ब्लड वेसल रिलैक्स हो गया ना तो आपको फ्लशिंग होता है, फ्लशिंग मतलब यू विल फील अ वार्म सेंसेशन, है ना। आपके अगर
पेरी स्किन के ब्लड वेसल जो है ना, वो अगर डायलेट हो गए ना, तो आपको एक गर्म का एहसास होता है, गर्मी महसूस होती है. सो रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल ऑफ स्किन रिजल्ट इन द फ्लशिंग. देखो किसी ने अगर एक दो पैक लगाया है ना, तो उसको ठंडी नहीं लगती. क्यों नहीं लगती? अल्कोहल causes the peripheral blood vessel dilation and result in the flushing, and that's why. Okay, so vasodilators also do same thing. So ये adverse effect भी होता है उसका. So result in the flushing. Okay, meningeal blood vessel also okay dilated. मतलब cerebral blood vessel भी dilate करता है. उसके कारण क्या होता है? Headache. So throbbing headache. So another adverse effect. So it dilates the blood vessels of skin, cerebral blood vessel, pulmonary blood vessels also dilated. That's why decrease in the pulmonary arterial pressure. किडनी में भी ब्लड वेसल डायलेट करेगा. सो renal flow is reduced. So these are the actions of nitrate on the other blood vessels. Now ADME, absorption, distribution, metabolism. They are readily absorbed from the orally as well as subliminally. And by using sublingual route, you can bypass the first pass effect of nitrates. Oral and transdermal patches are also available. Inhalation formulations are also available for amyl nitrate. Okay? Then nitrates undergo very high first pass metabolism. Except कौन है? Except है ना? Except आपको बोला है. Except क्या? Yes, anybody? कौन सा nitrates 100% बायो अवेलेबिलिटी का है? Isosorbide mononitrate. Isosorbide mononitrate as a negligible first precipitate, no first precipitate. और adverse effect क्या है इसके? So obviously headache करेगा. क्यों? क्योंकि dilate करता है blood vessel है ना खोपड़ी में. तो उसका कैसे करने का? You can use aspirin to control the headache. Hypotension करेगा. Hypotension कब करता है? क्यों करेगा hypotension? Obviously blood vessel dilate हो गए तो ब्लड कम आएगा हार्ट में. ब्लड कम आ गया हार्ट में तो हार्ट पंप भी कम करेगा, प्रेशर कम होगा. तो हाइपोटेंशन, सिंकोप, transient episode of giddiness, weakness, and other signs of cerebral ischemia associated with the postural hypotension. It is especially when patient stands immobile. पेशेंट अगर स्टेडी खड़ा रहा है नाइट्रेट्स का, तो उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ही डाउन होता है. कोल्ड स्वेट, आपको जो पसीना है वो कोल्ड होगा. नॉशिया, वोमिटिंग, इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन एंड पीसेस, मतलब खड़े खड़े ही निकल जाएंगे दोनों भी, आगे भी पीछे भी. टॉलरेंस, so nitrates they develop a tolerance easily. So tolerance to the various actions of nitrates, anti-anginal action, headache develops, and cross tolerance is also common. Now tolerance can be reduced by sublingual action. Withdrawal symptoms क्या है? Suddenly withdrawal किया आपने, sudden stop of nitrates therapy may precipitate the severe angina. अगर सडनली स्टॉप किया तो angina हो जाएगा आपको फिर से. coronary artery spasm, pentaerythritol tetranitrate commonly reduces the commonly produces the drug rash. Pentaerythritol tetranitrate जो है वो drug rash प्रोड्यूस करता है, and it is the longest acting. याद रखना है. अभी देखो sildenafil citrate, tadalafil, they are known as a phosphodiesterase inhibitor. If they are used along with the nitrates, so you may die. So they are contraindicated with the nitrates. तो कभी कभी जाके दवाई हो गई खाने का नहीं कोई भी है ना, तो कार्यक्रम हो जाएगा. So nitrates, what are the uses of nitrates? Therapeutic use of nitrates. All variety of angina pectoris, they are used at the onset of pain. They are also used in the myocardial infarction to decrease the pain. Angina pectoris, then myocardial infarction. Also used in the paroxysmal nocturnal dyspnea. रात में dyspnea of left ventricular failure. लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल हो गया आपका एंड उसमें अगर सांस नहीं आ रही तो इसका यूज करते हैं वैसोडाइलेटर नाइट्रेट्स. एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, एक्यूट एनल फिशर है ना, आपको अगर पाइल्स है तो उसमें भी यूज करते हैं. दीज आर द यूजेस. अनदर यूज इज नथिंग बट द साइनाइड पॉइजनिंग. अनदर यूज ऑफ दिस नाइट्रेट इज नथिंग बट द साइनाइड पॉइजनिंग. तो उसमें साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है? साइनाइड आयंस है ना साइनाइड है ना. What happens in the cyanide poisoning? These cyanide ions with cyanide, so it combines with the various enzymes of your body, particularly cytochrome. Cytochrome enzyme होता है आपकी body में, responsible for the respiration, cellular respiration. So it combines with the that cytochrome and it will block the cellular respiration. Cyanide का poisoning हुआ है ना आपको, तो आपका cellular respiration बंद हो जाएगा, आप मर जाओगे है ना.
So cyanide combines with the various enzymes of your cell responsible for the respiration, particularly cytochrome. Okay, and you will die. Now what happens? So in that condition, so amyl nitrate is used, sodium thiosulfate is used. Okay, then sodium thiosulfate is used. Two three drugs are used. Okay, sodium thiosulfate, sodium nitrile is used. Sodium nitrile, amyl nitrate, and sodium thiosulfate, they are used. Okay? Now what happens? Normally क्या होता है कि cyanide अगर poisoning हो गया, cyanide will combine with the cytochrome oxidase and it will prevent the cellular respiration. Cell will die and you will die. What happens when nitrates are given? So nitrates are given. Okay. So nitrates, they will react with the hemoglobin. Nitrates will react with the hemoglobin and convert hemoglobin into methemoglobin. Methemoglobin. Now methemoglobin और जो cyanide poisoning है, cyanide combine with the methemoglobin and convert it into cyanomethaglobin. बिकॉज नाइट्रेट दे दिया आपने तो हीमोग्लोबिन पहले ही इंगेज हो चुका है, उसने बनाया मिथ हीमोग्लोबिन. अब जब साइनाइड जब इसके साथ में कंबाइन होता है तो साइनोमिथाग्लोबिन बनता है, और साइनोमिथाग्लोबिन एक बार बना, यू कैन यूज सोडियम थायोसल्फेट. सोडियम थायोसल्फेट विल कन्वर्ट साइनोमिथाग्लोबिन इनटू थायोसाइनाइड व्हिच कैन, सोडियम सल्फेट जो है वो यूज करो आप. सोडियम सल्फेट यूज करेंगे तो थायोसाइनाइड द मेटाबोलाइट ऑफ सो सोडियम sodium sulfate will combine with the thiocyanate ion, okay, and will free the hemoglobin. जो hemoglobin है उसको free करेगा, hemoglobin को free करेगा, and now this thiocyanate ion can be excreted in the kidney. So that's how this nitrates, they will prevent the, they are useful in the cyanide poisoning. So amyl nitrate inhalation, amyl nitrate inhalation used in the cyanide poisoning. Amyl nitrate by inhalation route used in cyanide. Nitrates convert hemoglobin into methemoglobin, and methemoglobin compete with the cytochrome oxidase for cyanide. तो क्या होता है, अगर नॉर्मली साइनाइड गए आपके बॉडी तो वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को पकड़ लेगा और उसको इनहिबिट कर देगा, और बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा सेल को, आपको सांस नहीं आएगी, आप मर जाओगे. ठीक है, आप भी देखो क्या होता है कि साइनाइड पॉइजनिंग में नाइट्रेट्स देते हैं पहले, तो हीमोग्लोबिन जो है आपका वो नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट होता है, मिथेमोग्लोबिन बन जाता है, और मिथेमोग्लोबिन विल compete टू द cyanide ions, will compete with the cytochrome oxidase for the cyanide ion. मतलब क्या, मिथेमोग्लोबिन को एफिनिटी होता है cyanide ion की तरफ, है ना, वो ज्यादा अट्रैक्ट होता है तो वो जाएगा, और साइटोक्रोम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज फ्री रहेगा, है ना, वो फ्री रहेगा. ये मिथेमोग्लोबिन मिथेमोग्लोबिन उसको एंगेज कर लेगा. ओके, और वो कन्वर्ट होगा मिथेमोग्लोबिन प्लस साइनाइड साइनोमिथाग्लोबिन में. उसके बाद में सोडियम थायोसल्फेट दे दो, वो सोडियम थायोसल्फेट उसको साइनोमिथाग्लोबिन के साथ में कंबाइन होकर थायोसाइनाइड आयन को बाजू हाकल देगा, है ना, और हीमोग्लोबिन को निकाल देगा, और थायोसाइनाइड आयन सोडियम थायोसल्फेट कंबाइन होकर एक्सक्रीट करते हैं इसे. Amyl nitrate inhalation used in cyanide poisoning. Nitrates convert hemoglobin to methemoglobin. Methemoglobin compete with the cytochrome oxidase for cyanide ion. Combination of methemoglobin with the cyanide result in the formation of cyanomethaglobin, which is a non-toxic product, and it is cyanide poisoning. समझ में आया क्या? Cyanide poisoning समझ में आया क्या? अगर नहीं आया तो एक बार अच्छे से पढ़ लो इसको, इजीली समझ में आता है. Okay? Then there is one more new drug known as a, okay, there is one more new drug from this nitrate category known as a molcidomine. Molcidomine is a new drug from this nitrate category. Now it is the emerging drug. This drug does not develop tolerance. तो बाकी जो nitrates है, so nitrates they develop a tolerance to the anti-anginal action is developed. Molci, okay, molcidomine is a new drug which is developed from this category, and this drug does not have any tolerance. Okay. Now mechanism of action of nitrates you can see over here again. So nitrate acts very similar with the hydrazine. Hydrazine की जैसे ही करता है vasodilate. तो nitric oxide release करेगा वो nitrates and it convert GTP, okay, nitric oxide convert is converted into cyclic GTP into cyclic GMP by guanyl cyclase enzyme. Now cyclic GMP causes fall in the calcium
concentration in the vascular smooth muscle that causes relaxation. Now other drugs, बाकी कौन से ड्रग है यूज करते हैं, है ना? So other drugs. So other drug is nothing but the beta blockers. Am I audible to you? They are used in the all stages of ischemic heart disease except prismental or vasospastic angina, variant angina. Beta blockers, they are not used in the variant angina. Beta blockers block the action produced by sympathetic activity. Sympathetic activity क्या करता है? Heart rate increase करता है ना? In angina, what happens in the angina? Angina of exercise or angina of emotional excitement. Emotional excitement or exercise can induce the angina, which can result in the incidence of heart, okay, which can result in the increase in the heart rate, blood pressure, myocardial contractility, and oxidative metabolism. All these are the sympathetic activity which are blocked by, मतलब क्या कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, when you are doing exercise, when you are doing exercise or when you are under emotional excitement, है ना, emotions आ गए आपको, so it can induce the angina or this exercise emotional that result in the increase in the heart rate, blood pressure, myocardial contractility, and oxygen demand of myocardium. All these are nothing but the sympathetic activity. Now these activities are blocked by beta blockers. So they increases the exercise tolerance like nitrate without increasing the anginal index and prevent the both subject to ECG manifestation. जो भी ST elevation होता है ना, वो नहीं होने देगा. Okay? They are not useful in the presmental or vasospastic angina or variant angina. Long-term use of beta blocker after myocardial infarction has been shown to reduce the incidence or rate of reinfection and limited. The beta blockers, they are effective. Adverse reactions क्या है इनके? It can precipitate or aggravate the congestive cardiac failure. Beta blockers along with the digoxin must be watched for the डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ब्लॉक. बीटा ब्लॉकर्स अगर डिकोजिन के साथ में देंगे तो मॉनिटर करना है आपको, उसमें हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है. डेवलपमेंट ऑफ सीवियर सिंकोप व्हेन दे आर यूज्ड विद द नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रेट इन पेशेंट ऑन अ बीटा ब्लॉकर. तो नाइट्रेट और बीटा ब्लॉकर को अगर साथ में देना है तो वो पेशेंट में सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है, हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है. दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ वेरिएंट एंजाइना, बीटा ब्लॉकर्स. ओके, नेक्स्ट आता है आपका calcium channel blockers. So mechanism of action of calcium channel blockers. So what they will do? They will block or they will inhibit the entry of calcium through L type of calcium channel in the myocardial and vascular smooth muscle. So they will decrease the availability of intracellular calcium, and all these drugs bind to the alpha 1 subunit of L type of calcium channel. All they will have a negative inotropic effect. Negative inotropic effect मतलब क्या है? So they will decrease the, है ना, they will decrease the heart rate. So verapamil, lutetium, they are negative inotropic effect, and they should not be combined with the beta blockers because, you know, because beta blockers are also having same thing. They are also producing negative inotropic. This calcium channel blocker also doing same thing. तो ज़्यादा ही हार्ट ब्लॉक हो सकता है. Okay, anti-arrhythmic effect इनका. So these drugs decreases the rate of discharge from SA node and suppresses the ectopic pacemaker activity. Effect on coronary arteries. They are the coronary artery dilator. So they are the potent coronary artery dilator. They can prevent the spasm of artery and can be used in the presmental and variant angina. Effect on a peripheral blood vessels. Peripheral blood vessels के ऊपर क्या है? Decrease in the vascular resistance, blood pressure and both arteries, मतलब arteries में भी और veins में भी. और nifedipine is a more potent vasodilator than verapamil. उसका एंटी एंजिनल प्रॉपर्टी क्या है? ड्यू टू टू रीजन. फर्स्ट क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो ड्यू टू वेसोडाइलेशन प्रॉपर्टी, डिक्रीज इन द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ हार्ट ड्यू टू रिडक्शन इन द सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर. सो दैट कंट्रीब्यूट द एंटी एंजिनल एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. नेक्स्ट होता है इंडिविजुअल ड्रग वेरापामिल. इट कॉजेज द सप्रेशन ऑफ एस नोड एंड एवी नोड. एवी नोड से एस नोड का सप्रेशन करेगा, which is a calcium dependent. Coronary and peripheral vasodilation भी करता है. So it will decrease the preload, AV block. Okay, potent antiarrhythmic effect is also there, and potent negative inotropic effect is there. Adverse reaction क्या है इसकी? Constipation करेगा ये, वर्टिगो चक्कर लाएगा, ब्रैडिकार्डिया, हार्ट रेट कम करेगा, हार्ट ब्लॉक करेगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी कर सकता है, हाइपरटेंशन, एंकल एडिमा,
एंकल इडिमा के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Ankle edema is the adverse effect of verapamil. Diltiazem, dibenzodiazepine derivative. Again, it is a negative inotropic drug, less than verapamil and nifedipine, and it should be avoided. It, it should be avoided in the patient of congestive cardiac failure. Nifedipine क्या है? It is a dihydropyrimidine derivative.